Beautiful. Every part of it, it's beautiful, really. So मैं आपको बताऊँगा यहाँ यज्ञ भी कहाँ होता था. यज्ञ भी ऐसी जगह होता था जहाँ पे धुआं ना निकल सके. So it's one of the most beautiful things and mindful thing I've seen. यज्ञ होता था वहाँ पे, ठीक है. I'll just show you. That's the यज्ञ point over there. चिमनी वहाँ पे थे कि गैसेस बाहर आ सके. So one of a kind I guess. एंड उधर भी यज्ञ होता था. तो मंदिर के सामने यज्ञ होता था. एंड कहते हैं कि ब्रिज भी होता था. यू कैन सी द ब्रिज होता है, वो टूट चुका है, भूकंप आया था. तो many things. So Nandi Bhagwan and going inside to look at the Kailash temple. Okay. So यहाँ पे ब्रिजेस हुआ करता था, पत्थर का ही था, पत्थर का ही बनाया हुआ था, बट वो टूट चुका है. So I think will not be seen again because टूट चुका है वो. And let's see क्या देखते हैं. So let's go inside and let's do the darshan of our Shankar Bhagwan, a Shivling. That's also a monolithic thing. Okay. So काफ़ी भीड़ है. गंगा जी and सरस्वती जी same on both sides. Let's go. The paintings you can see the top and I mean bead is quite so much, so can't explain. Let's go. So this is the inside of the mandir and using paintings and all, they are little bit gone, but as you can see the entry of very important, just giving the, you can see on the upside is and here dances has been happening all the time. That's why this is also called the Nityagraha. I'm standing on it. So hey, it's showing something. It's showing something. Nataraj, I will tell you. Oh my God, really? Oh, beautiful. I am just going down and as you can see the pillars and columns of the mandir, they are way too big and very strong, like they're bigger. कह रहा है कि दूर से देखोगे तो लगेगा 3D लगता है, रियल. हाँ सही में यार, रियल दिख ही रहा है. अब लोग बड़ी good. And this is the columns and yeah, this is same Yamuna, Ganga, deciding on both sides. And let's and Har Har Mahadev, Jai Bholenath. This is a Shivling carved from that same mountain as of the whole mandir. So let's just beautiful. We'll just stand out somewhere and we'll just show you the whole Shivling. Okay. It's the main Shivling of Kailash temple. This Shivling is khandit from one side, that's why puja part तो नहीं होता है, but its importance is not degraded. Okay. On the upside, it's beautiful. Jai Shri Shambhu, Har Har Mahadev. We'll do the puja and we'll come back. सेम माउंटेन से क्राउड हुआ है, वो अलग से शिवलिंग आप रखा नहीं है लाके. ये जब पूरा मंदिर फॉर्म हुआ तो लास्ट में शिवलिंग फॉर्म हुआ, तो दैट्स वेरी रेयर, ऑफ द रेयरेस्ट. डाउन डाउन डाउन. ओके ओके ओके. Let's go. And sit.
ब्यूटीफुल मंदिर मैन। ये लाइटिंग की ज़रूरत है इधर यार। लुक एट इट। Look, just the imagination of it, nothing else. Beautiful. Let's go out and let's see the surrounding parts of the mandir. You have seen many temples with me, many forts with me. अभी हम एक दौलताबाद फोर्ट देख के आ रहे हैं. You can see the joints everywhere. Like you can see the interlocking joints or some other kind of joints around here, or cement or limestone. किसी से भी तो भी उसको पैच किया जाता है. But in here you can't see a single joint. Just look at it. Anywhere. कहीं भी joint नहीं है. Because this is carved from a single mountain. Okay. So this is one of a kind, I guess. And मध्य प्रदेश में भी है. But very rare, so see. Very rare. इतना सुंदर नहीं है मध्य प्रदेश वाला. One day also I'll visit it, but look at this. No joint, nothing. From the single monolithic mountain. Stone. Beautiful. So let's go and explore the other parts of the temple. Exploring the mandir from the outside, and now you can see the sculptures of the Mahabharata, I guess. I don't have everything to explain, but yeah, let's see how much I can explain to you. So from the point up you can see okay, let me just for you, this is many things around. छोटी छोटी चीज़ें बहुत है, तो हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, बट इट्स नॉट वेरी मच विजिबल, सो सॉरी फॉर दैट. एज यू कैन सी ये हर एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है महाभारत का. ठीक है, टेक अ डीप लुक एट इट. ये हमारा जो अभी दिख रहा है ये है, और इसे एपिसोड ऑफ महाभारत. यू कैन सी बट एवरीथिंग इज़ वेरी छोटा छोटा, लिटिल. सो आई डोंट रिमेंबर एवरीथिंग, बट वन थिंग फॉर श्योर दैट लास्ट में जो 5 पांडव थे वो आके कृष्ण भगवान को मिल रहे हैं एंड समर्पित हो रहे हैं. तो अर्जुन जो आपके कृष्ण भगवान के पैरों में दिख रहे हैं विथ एंड you can see many things. Karan or and everything. I don't know how much more I can explain, but it's so minute. Okay, and यहाँ पे एपिसोड ऑफ कृष्ण लीला वो अच्छे से दर्शाई हुई है. ठीक है, you can see जब बहुत बारिश आ गई थी तो उन्होंने यही गाय के मतलब पर्वत उठा के रखा था झाड़ के नीचे पूरे गोकुलवासियों को. तो इट्स ऑल डिपिक्टेड वेरी नाइसली. So let's go and see all the parts of mandir, and I'll just show you. Okay. So let's go on the top side, that side. Explain. Okay, everything to you. So this whole temple is a form of rath because हर चीज़ डिपिक्टेड है रथ के फॉर्म में. सो वी शो यू. ओके, सारे हाथी आप सूंड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से रिस्टोर्ड है फिलहाल में. शेर भी आप देख सकते हैं, पौराणिक हमारा जो शेर था. चाइना में जैसे ड्रैगन नाम का जो एक काल्पनिक क्रीचर है, वैसे हमारे यहाँ एक काल्पनिक क्रीचर ये है, एक शेर जो काफ़ी अलग है. सो या इट्स द होल टेम्पल कट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इज़ ऑल ऑन द दिस शेर एंड हाथी. ऐसा लग रहा है कि उसके नीचे सब ने सपोर्ट करके रखा और ये मंदिर को चला रहे हैं.
like in the form of Rath that I can imagine from this structure. Let's go up and let me just show you all the structures now. Okay. This mandir should be seen by the children because they need to focus on our and see our culture how it is. So have a look, proper look. यहाँ पे डिपिक्शन दिखा रहा है कि हाथी और शेर कैसे हमारे ये मंदिर को उठा के लेके चल रहे हैं. लाइक कितना ब्यूटीफुल वर्णन है. अगर कोई देखना चाहेगा तो हैव अ लुक. तो इसको इसी जगह पास ये बॉटल वॉटल फेंक के रखे हैं साले ऐसे. तो now let's look at it. Beautiful man. And this is all on the cantilever. पुराना पर्वत अभी जो कटा हुआ था उसको हमने एक पिलर पे ले लिया है. I will show you all the pillar. Look at the simplicity of it. It's like a photo लेने लायक है seriously. ये सब पत्थर काटे हुए हैं. ठीक है. Look at it. And सब कुछ दिखाऊंगा. ये शंकर शिवलिंग को रावण ने उठाया हुआ है. एवरीथिंग डिपिक्टेबल बट हैव अ लुक एट दिस वन. ओके हैव अ लुक मैन. ब्यूटीफुल है ना. तो लग रहा है ना कि हाथी और शेरों ने ये मंदिर उठा के रथ बना के चला रहे हैं. लेट्स गो एंड I'll explain each and every मूर्ति. So this is the Shankar Parvati cane. Shankar Parvati with side Nandi on the bottom side. Shankar Parvati. And yep, again we can see Shankar Parvati sitting peacefully. The Nandi behind below them. And yeah, this is the famous Harihara structure of Shankar Bhagwan half side. And half side is Vishnu. You can see the Nandi and Garud that is not visible right now, but it's there. So very famous and very known to be place. There is also Shankar Bhagwan and Ma Parvati. Look at it, man, and look at this sheep. I'm telling you, because पूरा पर्वत जो है, पूरा पहाड़ जो है, एक कॉलम से बेसा हुआ है. Like look at it. No, just not telling it, man. See it, okay, to believe it, okay. Have a look, man. Yes, Shankar Bhagwan and Ma Parvati. Oh, don't need to say Shankar Bhagwan, Ma Parvati. And look at this temple. Bhai Sahab. Now you can see they are Shankar Bhagwan, Ma Parvati playing, and his Shankar Bhagwan is catching Ma Parvati hand not to leave and play with him some kind of game, I guess. And he's telling no. So yeah, I'm not depicting it, I've read it, that's why I know this kind of information. And now you can see the bucks are bowing in front of him. And this is the famous Markandeya, small Markandeya losing his life to the Yam, and Yam is taken care of by Shankar Bhagwan. The famous depictions, really. Wow, man. Wow. The Vishnu, and look at it, really. Wow, I mean, beauty. ये ख़त्म हो गया इतना, अभी एक चालू है. आप सोचिए ना कितना परफेक्ट है हर चीज़. ऑन द रथ, I don't know why he is not getting me, but ये शायद रथ पे है, and with a bow and arrow. So beautiful. Obviously this is Shankar Bhagwan with the Damru and Ma Parvati. Yup. So
to just have a view of this beautiful Kailash temple. Picture perfect, I guess. Yeah? Woo. Beautiful. Mesmerized. That's what I can say. I guess this is Lord Narasimha coming out from the pillar. I guess. Because I have no idea because nothing is written here. So I can guess that. Because it's coming out from the pillar, no? That's why. Some elephants are still very much beautifully carved out. You can look at it. Yep. And keep well restored, man. ये मंदिर अटैक हुआ था इसलिए शिवलिंग जो है थोड़ा टूटा हुआ खंडित है. ऐसा है, पूजा अर्चना नहीं होती है यहाँ पे. एंड I can't say what it is, but beautiful. This is the Harihara again, and one side is of Lord Shiva, one side is of Lord Vishnu with Garud and Nandi, Trishul and Shankh. So beautiful. So Lord Vishnu with Sudarshan Chakra, Garud, everything. Lord Brahma. Epic, man, epic. Ooh, perfect. Prominent is Ardhanarishwar, one form of Lord Shiv and one form of Ma Parvati. Very, very, very unique. Yeah. It is important as very important. Okay, I don't know what it is, but some kind of Brahmaji, or this is the famous. You don't have to tell. I don't have to tell you what it is. This is famous Lord Narasimha killing the demon king Hiranyakashipu. Lord Vishnu Narasimha. Lord Vishnu swimming in the cosmic ocean, and Brahmaji coming out from his kamal. So beautiful. Have a look, man. I mean, yeah, just nothing. And as human, we should be doing this for many times. So this is the human roop of Lord Vishnu. Beautiful. This is Garud, Vishnu Bhagwan on Garud, and yep, the beautiful Kailash temple also. मतलब टीवी की मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना एंटरटेनिंग है ऐसा अगर आप डीपली देखोगे तो. लाइक सी हाउ इट इज़ ऑन अ रथ. ब्यूटीफुल. कितना भी कैप्चर कर लूँ ये मेरे लिए कमी है. आई विल surely come with my sister sometime to show you. This is the Varaha Roop of Lord Vishnu. Look at it. I don't know what it is. This is Lord Vishnu also. And same Lord Vishnu. And this is Mata's Roop. So beautiful. Have a deep look at this beautiful कैलाश टेम्पल. एक कैलाश पर्वत है और एक कैलाश टेम्पल है जो पर्वत काट के बना है. स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस. ब्यूटीफुल. जहाँ पे सारी यज्ञ सभाएं होती थी और द कैलाश टेम्पल. और कहते हैं कि यही यज्ञ सभा से जो फ्लेम्स निकलती थी, फ्लेम्स और फ्यूम्स बचने के लिए दे हैव मेड दिस यज्ञ सभा. ऑल एवरीथिंग इनसाइड आल्सो सो दैट वी शुड बी गेटिंग अ प्योर व्यू ऑफ द टेंपल. दैट्स व्हाई इट इज द कैलाश टेंपल.
So just show you everything. So I'll just let you know what is this. This is a very beautiful structure of Lord Shiva holding his Kailash Parvat on the Ravan. So I'll just let you know once you get down. But have a look. The deep stairs of the building. This is the cave. यहाँ पे यज्ञ होते थे. यज्ञ यहाँ पे होते थे क्योंकि जो फ्यूम्स और जो धुआं निकलता था वह मंदिर को ख़राब ना करे, तो यज्ञ यहाँ हुआ करता था. Let's go. Let's go down now. Okay, I'll explain you about this beautiful structure. So again on the मंदिर, just forget it. थोड़ा सा बैठा मैं, चिल मारा, and we are again at the mandir. Look at it. Whole structure has been at the elephants and the lions. See, look at it. Elephants and the lion. They both are fighting. Somewhere you can see elephants and lions both sides. You can see on the corner of it. So have a look. This is elephant and lion on both sides fighting. So क्या बताऊँ? And one thing I just want to show you is and Hanuman's fight. How you can see lost that episode also. And here they are getting milap. So beautiful. So coming towards the main sculptures of the mandir, we have here. I told you, I'll show you. This is the 10-headed demon Ravan lifting the Kailash Parvat, and both on that side is Shankar, and Shankar pressing his tip of his toe on the Kailash Parvat, and you can see the eyes are bulging out of the demon king Ravan. So that's why this sculpture is very important. You can see the eyes are bulging out, very important. So I guess I've shown you each and every part of it, and that's the Kailash temple for you. आगे चलते हैं, थोड़ा फोटो ले लेता हूँ. Forward from this beautiful structure of the Shiv Puran, coming towards the sculptures of Ramayana, and on the other side of the you can see the Nityagraha, you can see the Ramayana. All from the top, you see every part of it, like the killing of the demon king Ravan, and Hanumanji sitting on his own tail like this, and there's a Ravan also there showing up, Hanumanji over there. So all the episodes of the Sri Ramayana also I've seen, as you can see, the fight of Sugriv, okay, and many things right from the top, the born of Ramji, and everything. So beautiful, man, really beautiful. Killing of Kichak, you can see. So it's endless. So it's nothing else. So coming down to this beautiful stump over there, that's the main part. Okay. And there's the caves also, many caves. So from Madani also here. So that cave over there is the Yagya Bhavan, and that's the gallery over there. So beautiful. Oh, very beautiful. And ये अगर आप 20 रुपए का नोट निकालिए और देख लीजिए, आपको ये स्तंभ मिलेगा. So that's the Kirti Stamp of Ellora. So now let's get down now and let's explore the other parts of the Ellora real quick. Then हमको चलना है कहाँ पे? मेरे पैर में लगी है. To the Giriji Jyotirling. Let's go. Beautiful. And yeah, let's get out now. So
जय श्री शंभू। Okay, let's go. Came out of this and really I spent 2.5 hours here, more than a movie really. So अभी चलते हैं and let's see कि what we have more. Okay, what we have more. Okay, the caves. We're going towards the Buddhist monasteries, and there's one Chindamani Mandir also of Lord Buddha. So we'll see that. But first, let's explore the Buddhist temples, because there are monasteries of many kinds around here, and this whole thing is famous for the sculptures around here. Okay, so let's go and explore it, because बहुत सारी caves हैं. ये 11th century, no sorry 8th century caves है, 8th to 9th century. After that Hindu caves जो develop हुए, that is Kailashas and everyone over there. But these are very old caves of like 6th to 8th century I guess. So we'll go and see. यहाँ पे बुद्ध जी का मंदिर भी है, and there is a monastery. Monastery are the places where the disciples of Lord Buddha or the teachings जो teachings बताते हैं वो ध्यान में meditate करते हैं. So this is mostly very chilled inside the caves. So let's go inside. As you can see, there are 3 layers of caves. I will just show you. There are monasteries. I can see from that side. These are monasteries. Okay. One खुशखबरी एक मिल गई है कि 6 बजे मेरी ट्रेन है जो औरंगाबाद से मनमाड़ जाएगी. So वेरी हैप्पी. अदरवाइज बहुत सारी ट्रेन जो थी वो थोड़ी जल्दी थी या थोड़ी लेट थी. सो थैंक यू फॉर दैट. अपडेट दे दिया हूँ. मैं बोला ये चलो ठीक है, ये केव्स है. मैं अभी आपको मंदिर दिखा देता हूँ, और बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हैं यहाँ पे. सो वो देख लेते हैं. सो इसको ओके. यहाँ का अगर एलोरा का मैं एक चीज़ बताऊँ ना, कैलाश टेम्पल इज़ द बेस्ट. सो there are monasteries, nothing else. These are all the caves. Loras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And this one is a mandir of Lord Buddha. I don't know the name of the mandir, but let's just go and see it. कहते हैं कि यहाँ पे जो लॉर्ड बुद्ध ने जब समाधि ले ली थी और उनके जो अवशेष थे वो यहीं लाए थे. So it's a kind of doing the meditation in front of Lord Buddha. So let's go. Beautiful. As compared to the other monasteries and simple things, these are super beautiful. Okay, let's just remove the shoes and let's go. Only Chaitya Griha address. Look at this. So if you want to read it by doing the pause. Let's go. Let's see. Next floor. So as you can see, the temple inside it, and yeah, it's comparatively very much what do you say, thanda over here. So Lord Buddha's statue, and yeah, he's in the form of teachings form. That's why you can see his hand, and all it's like carved like a wooden thing. That's why it's all like that. So it's very beautiful, and you can see the echo here. Om Om Namah Parvati Pate. Om. Yeah, it's good. Oh, what is ecological eco site. Beautiful. कहते हैं कि
वट पृष्ठ जैसा वो चीज़ है, एंड यहीं पे उनकी अस्थियाँ रखी गई थी. सो pretty good. So let's get out and let's see other monasteries and other types. Okay. Jai Shri Shambhu. Pretty good temple of Lord Buddha. That's the temple. There are some monasteries. We'll go in some of the monasteries and we'll see ourselves, because they're all stone up, nothing else, because there's no painting inside there, as you can see in Ajanta. But yeah, let's explore one of those, I guess. So, cave number 11. Okay, let's go. Because 6:30 बजे की ट्रेन है. I don't want to miss it. Okay, so let's go on the monastery. 3-layer monastery. ये भी वैसी कटे हुए पहाड़ से बनी हुई है. लाइक यू सी, पहले ऊपर से नीचे काटा गया उसको, फिर अंदर लिया गया. मतलब समझ रहे हो आप. अदरवाइज इट वाज वेरी हार्ड टू कट ऑल दिस थिंग. सो पहले दे हैव कट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम एंड देन अंदर अंदर काटते हुए चले गए. सो आपको कई सारे ऐसी जगह मिल जाएगी जो पानी की पॉन्ड वगैरह जो काटना मुश्किल था, बट दे ट्राई टू डू इट. ओके, सो बॉटम से आप देखते हैं, एक दिखाऊंगा एंड वी विल गो टू ग्रेट जनेश्वर ज्योतिर्लिंग. तो दिस इज अ बुद्धा स्टैचू. अब यहाँ मॉनेस्ट्री नहीं बनी. कभी कभी कोई पत्थर बनाने के लिए नहीं होता है. सो ये लोग ट्राइड एंड टेस्टेड करते थे पहले, क्योंकि ये सबसे पहले की एलोरा की केव्स हैं, बिफोर दैट कैलाश ऑल्सो. सो इसलिए कहते हैं कि इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है. एंड 3 लेयर्स में मॉनेस्ट्रीज में है. यहाँ पे जो भी बोधी लोग होते थे वो खुद आगे अपना मेडिटेशन ध्यान करते थे. सो इट्स गेट गोइंग देम. सिंपल आर्किटेक्चर, बिकॉज ये काफ़ी पुरानी है. सो दैट्स द गेम, आई गेस. सो as you can see, so let's go on the top side and I'll show you. I've come across some monasteries. See how big the statue is. जहाँ जहाँ नहीं बन पाता था ना, वो ऐसे स्टैचू बना के छोड़ देते थे. ठीक है, मतलब रूम वगैरह नहीं बन पाते थे. तो गेट इट. ओके, हाँ यहाँ देख लो, यहाँ बन गया तो बैठने के लिए थोड़ा बहुत बना दिया. सो द इरेगुलरिटी, यू नो, क्योंकि नहीं जमता है कभी कभी, क्योंकि ये पत्थर डेक्कन प्लेटू के पत्थर है एंड दे आर बसाल्ट पत्थर. हर लेयर अलग अलग होती है. तो इसी सो लेट्स गेट द टॉप टायर. आई गेस वी कैन सी सम मॉनेस्ट्रीज. ओके, ऐसा ही होता है. यू हैव टू सर्च एंड डू great things, take time and take your work, hard work, and it will give you back the greater. Okay, but you have to work hard every time. You have to do it and work harder. So getting on for the top tier. So yeah, 3-layer monastery scene ki they are going on the top. See, see the preciseness of this beautiful monasteries. And in the top tier monastery, and yeah, here we can see some rooms to meditate. Okay, so yeah, smelling like very old, but ऊपर में पेंटिंग्स होती थी. बट यहाँ पे अकोमोडेशन होने के कारण बहुत लोग ने खाना पीना बनाना चालू कर दिए थे, जिसके कारण ये सारी जल गया. सो दिस इज व्हाट इट इज मैन. अजंता में यही खास बात है, अजंता का अभी तक प्रिजर्व्ड है. लाइक अजंता इधर से 100 किलोमीटर से. विल गो वन डे टू दैट ऑल्सो. मैं गया हूँ पहले भी, बट फिर से चलेंगे. तो अजंता प्रिजर्व्ड है, बट नॉट दिस वन. सो यहाँ के स्कल्पचर्स काफ़ी सही है. अजंता के उतने सही नहीं है.
क्योंकि अजंता बहुत सालों बाद ब्रिटिश राज में मिला था और ये बहुत पहले से एक्सप्लोर्ड है। तो थिंक मैं लेट्स गो, निकलते हैं बाहर अभी, ठीक है, क्योंकि 6:30 बजे की ट्रेन है एंड वॉन्ट मिस इट। 8 बजे की मिलेगी तो मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। जिसको yep, that was my favorite Kailash temple and other monasteries over there and the Jain temples over there. So the Jain temple were the newest part addition to this beautiful Ellora caves. I don't know how the name Ellora came, but it was something unique. So Ajanta is like okay, but Ellora is very different. So beautiful atmosphere around here. Let's get out and let's go to Vigneshwar Jyotirlinga. Okay, let's get out. Man, oh man. Just let's go. Okay. जो है भोले बाबा, और वहाँ से फ़ोटो भी लेनी है। 12 ज्योतिर्लिंग है, आखिरी ज्योतिर्लिंग है ये है जो अभी जा रहे हैं विघ्नेश्वर। जस्ट और हिंदू क्योंकि 6 बजे मेरे को पहुँचना भी है। सो उसको कमिंग बैक ब्यूटीफुल कैलाश टेम्पल एंड अभी लेट्स गो टूवर्ड्स कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 1/2 किलोमीटर पे, तो आराम से पहुँच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स गो लेट्स सी इट हाउ इट इज़। ओके, कनेक्टेड ही है दोनों अगर देखा जाए तो। इफ़ यू वांट टू कम टू अलोरा यू कैन इजीली गेट टू कैलाश टेम्पल एंड वाइस वर्सा। सो